Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. एक पेंसिल दो ना. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Yeah, Good afternoon, ma'am. yeah, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Blackboard is visible. Yes, ma'am. Blackboard is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, children, today we are starting this new chapter as we have completed the previous one. So, that is chapter number 13 of your book. Page number 239. That is synthetic fibers and plastics. Here, before that, children, before starting this chapter,
I am just telling you, some of you, a name I have written on your WhatsApp, 8G. You all have attempted the previous question paper of the previous week. So you will not get marks. Previous week का question paper क्यों attend किए हो? आपका syllabus क्या था? Syllabus में कौन सा chapter था? हाँ? मैम जो Combustion. स्नैपचैट पे आया था वही Combustion. क्या Pardon? Combustion chapter था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग को Yes, ma'am. metals क्यों किए हो? Why have you attempted that? That means you are not sure. अगर आप लोग को जिसका ये मिस्टेक हुआ है वो Who is speaking? कौन ये बात कर रहा है? अदिति सिंह और हर्षित. Ma'am, Aditi Singh. Aditi Singh. आवाज आ रहा है. Why are you talking? Yes, ma'am. आवाज आ रही है. Aditi Singh. Stop talking. I am telling you few names I have mentioned in 8G. You all have submitted previous class question answer sheet. Previous question paper. Ma'am, mute Aditi Singh. Yes, ma'am. Mute Aditi Singh. Ma'am, your voice is not coming. How many types of fibers are there, children? Ma'am, two types of fiber. Ma'am, Two types of fiber. Ma'am, two types. Two types of fiber. Two types. Two types of fiber. What are they? Ma'am, man-made fibers. Natural fiber. Natural and man-made fiber. Natural and synthetic fiber. Natural and synthetic fiber. Man-made. Natural and Okay. synthetic fibers. So these natural fibers are obtained from the nature. That means the plants and animals. यही ना nature से मिलेगा हम लोग को. Yes, या ma'am. Yes, ma'am. insects also. So why we are dependent on synthetic fibers, or why there is so much of development of synthetic fibers? Why not on natural? Ever increasing demand. Pardon? Ma'am, to fulfill ever increasing demand.
Very good. To fulfill the ever increasing demand of the growing population. ज्यादा population increase होने के कारण हम लोग synthetic fibers पर switch on करते हैं. Then what are the drawbacks of the natural fiber? Why can't we fulfill it with the natural fibers? अगर मान लो growing fulfill the demand है, तो why can't we fulfill it with the natural fibers? Because Then? demand of fiber is very high. Ma'am, because it is And very because demand of fiber is very less and its fiber is Its demand It is is very very high. demandable. Yeah, amount. Ma'am, because Demand- natural fibers is less in quantity. Pardon? Yes, you tell again. Ma'am, because natural fibers are less in quantity. Not less in quantity, but it will take more time to be produced. Ma'am, time What you are trying to say, I can understand, but appropriate word you will use. Natural fibers will take more time to be produced because we cannot produce it according to our convenience. क्या plants को हम अपने हिसाब से grow करवा सकते हैं? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ma'am. No, A certain time, as we have studied in No, plant ma'am. production also, and we know also that plants will take its own time for its growth, है ना? अपने growth के लिए plants, animals जो भी है, वो अपना time लेकर ही grow करेंगे. Like if we are taking cotton, we are getting fiber from cotton, तो cotton plant को grow करने में जितना time लगेगा, उसको हम minimize तो नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं? No, ma'am. नहीं कर सकते हैं. No, So ma'am. it is not under our control. लेकिन synthetic fibers का अगर demand बहुत ज्यादा आता है, suppose there is a order to fulfill for a particular factory or company, कुछ order आता है जो कि बहुत large order है, तो उसको वो लोग अगर चाहेगा तो fulfill कर सकता है ना? कैसे कर सकता है ये बताओ? How will it be? synthetic fiber. use of machine. Man-made fiber. Ma'am, use of man-made fibers. ठीक है, मैन मेड फाइबर्स, लेकिन अगर मैन मेड फाइबर्स को का भी डिमांड जैसे नेचुरल फाइबर्स में है कि उसका एक टाइम पीरियड है तभी वो पूरा हो सकता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स इजीली कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, कैसे एक टाइम क्योंकि मशीन से बनता है. Ma'am, because it is chemically made by बना- अपने हिसाब से machine. उसे बना सकते हैं. Ma'am, because it is made by machine. And machine Yes, will ma'am, work because at any Made by time. machine Made in by large machine. amount. हाँ, Ma'am, because it is made by machine and which is controllable by the human. yes, we can, if we are making it with a machine, then we can increase the labors, we can increase the working time को increase कर सकते हैं, laborer को increase कर सकते हैं, number of machines more लगा सकते हैं to fulfill that demand, है ना? I am just taking example of a certain suppose factory. अगर factory में आया कि इतना आपको production करना है, suppose 2000 pieces of particular cloth or particular fiber, तो वो क्या करेगा, अपना वर्किंग जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा लेगा तो उसके बाद वो सिंथेटिक फाइबर्स विद इन टाइम वो प्रोडक्शन को पूरा कर सकता है, लेकिन नेचुरल फाइबर्स के साथ ये नहीं किया जा सकता है. इट विल टेक इट्स ओन टाइम फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर इट्स डेवलपमेंट. दैट इज व्हाई वी प्रिफर synthetic fibers to fulfill the demand as compared to natural fiber. Is it clear? My point is clear, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात समझ में आ रही है कि यहाँ हम अपने मर्जी से अपना वर्किंग आवर, मशीन का मशीन, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ वर्कर्स we can increase, but there we cannot increase the there we cannot reduce the time taken for the growth of a particular type of plant or particular type of animal or particular type of insect. जैसे हम लोग को एनिमल से भी फाइबर्स मिलते हैं, तो एनिमल का ग्रोथ जो उसका नेचुरल है उसको हम लोग इनहांस नहीं ना कर सकते हैं, या इंसेक्ट से हमें सिल्क No, मिलता है, ma'am.
सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है तो सिल्कवर्म को हम जल्दी से ग्रो तो नहीं करवा सकते हैं, है ना? Yes, ma'am. It will take its own time. That is the difference. Now we will talk about synthetic fibers. What is this structure? कैसा वो रहता है, उसका arrangement of the molecules, how it is. So children, have you ever seen necklace made up of beads? Yes, ma'am. बीड्स का नेकलेस बना हुआ देखते हो? मोती की माला पहने हुए Yes, किसी को ma'am. देखते हो? Ma'am. देखते हो? Yes, ma'am. We often ma'am. and then see. So what we see that the beads are arranged in this type of sequence. इस तरह के sequence में वो necklace बनता है. तो जब synthetic fibers का भी same तरह का arrangement होता है, वो भी उसका molecules जो होता है वो एक दूसरे से इसी तरह beads की तरह connected होता है. वो जब single chain में होता है, when it is connected in a single chain, joined in a simple molecules, then that is known as monomers. और ये monomers जब larger chains बनाता है, then that is known as polymers. जब आप देखते होगे हम लोग को कपड़े कैसे मिलते हैं, थान में मिलते हैं, बड़े बड़े पीसेस में मिलते हैं, तो यही जब बड़ा huge scale production होता है, तो this small molecules, small particles, the small beads which are there, they are developing into larger sheet and they are known as polymers. Or you can understand in this way, wagon, जो ट्रेन का वैगन होता है, कंपार्टमेंट होता है, बॉगी होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. चिल्ड्रन डोंट टॉक अमंग योरसेल्फ. जो पूछना है क्लास में पूछो. If you will discuss, you will also get disturbed and I will also get disturbed. So don't talk. And very few students are joining in this class. Prefect, please take the attendance and just send it to me. They will not get their just marks and all. आप लोग फिर allowed नहीं होइएगा जिसका भी attendance होगा terminals देने के लिए. So just you attend the class, all of you properly. Tell this, give this message, prefects. So, what I was talking, that the wagons, the train compartment or bogies, they all are also connected with powerful magnets with each other. And they run on the railway track. So in the same way, these monomers are also arranged in a sequence. And when they make a large sequence, when they are in smaller sequence, then they are known as monomers. When that sequence increases, then that is known as polymers. And the process by which these polymers develop is known as polymerization. Is it clear, children? Yes, ma'am. What is Yes, ma'am. monomers? Yes, ma'am. Monomers are small beads, small chains. जब वो छोटा चेन बनाता है तो उसको मोनोमर्स बोलते हैं, और जब वो लंबा चेन बनाता है then that is known as polymers. Because we see that the clothes are available in large sheet. बहुत बड़ा बड़ा थान में हम लोग को मिलता है क्लोथ, है ना? तो those are developed by the development of polymers. And these polymers, the process by which these polymers are developed, that process is known as polymerization. Any doubt till here, children? No, ma'am. No doubt. No, ma'am. Clear? Any questions? Can I? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Then, children, whenever you go to the market, you like to purchase something new in your clothes, है ना? हम लोग सब लोग fascinated होते हैं clothes से. Clothes से हम चाहते हैं कि हर समय जब भी हम market जाएं तो एक नए variety का dress, एक नए texture का dress, एक नया material हमें मिले, जिसके कारण we feel pleasure for it, isn't it? कि हमको एक नए तरह का कपड़ा मिला, है ना? तो we also ask the shopkeepers that something new has arrived. तो आप
how is this new things developed in this synthetic fibers? New कैसे बनाया जाता है? हर बार क्या कोई इन्वेंशन By होते रहते mixing. हैं? No, ma'am. तो Ma'am, by क्या होता mixing two or more fibers. Yes, very good answer. By mixing two or more type of different fibers, and this testing is being done all the time. और आप देखते हो कि फैब्रिक वर्ल्ड में बहुत ही रिवोल्यूशन आया है। आप पहले हम लोग को केवल कॉटन कपड़ा मिलता था, वेरी डल लुक, डल अपीयरेंस इन लॉन्ग बैक, लेकिन अब आप मार्केट जाते होगे, ब्राइटनेस इज देयर, कलरफुल इज देयर, टेक्सचर इज वेरी फाइन. So all these are due to the mixing and matching of the different synthetic fibers with different things or different other fibers. तो उसके कारण जो नया टेक्सचर डेवलप होता है, that gives you a new look of the cloth. Then for that we should know what are the basic synthetic fibers. कौन कौन सा basic synthetic fibers है जो दूसरे के साथ मिक्स करके और बनाया जा सकता है. तो फाइबर्स का, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज किस किस फील्ड में होता है, ये पता है आप लोग को? No, ma'am. अपार्ट फ्रॉम क्लोथ बनाने के अलावा सिंथेटिक फाइबर्स का यूज रोप बनाने में, सिंथेटिक रोप्स आप देखते हो, देन पैराशूट्स, देन एप्रल्स, जैकेट्स, कारपेट्स, डोर मैट्स, then you can say different types of surgical product. Surgical product किसको कहते हैं? Ma'am. Which is used in surgery. Which is used in surgery. Yes, ma'am. They are also a different type of fiber. और टायर कॉर्ड, ये सब के लिए हमें अलग अलग तरह का मटेरियल चाहिए. तो फर्स्ट मटेरियल दैट इज योर पार्शियली सिंथेटिक, नॉट फुली सिंथेटिक, because it is mixed with a wood pulp. wood pulp के साथ चूंकि इसको केमिकल्स को मिक्स किया जाता है, इसलिए ये this is not totally synthetic. ये partially है and it is known as rayon or artificial silk. Its name is also artificial. Now, as I told you that pure silk will be more costly because it will take more time to develop. उसको डेवलप करने में ज्यादा यू कैन से कॉस्ट लगता है, इसलिए प्योर सिल्क ज्यादा महंगा होता है. सो जस्ट टू हैव अ लुक लाइक दैट, उसी के जैसा कोई मतलब क्लोथ डेवलप करने के लिए हम लोग ये रेयन सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क और विच इज ऑल्सो नोन एज रीजेनरेटेड फाइबर का डेवलपमेंट. और इसका डेवलपमेंट किस चीज से होता है? केमिकल्स. जो सिल्क का ये रहता है समथिंग लाइक सिमिलर टू सिल्क, उस तरह के केमिकल को यूज किया जाता है और वुड पल्प को के साथ इसको मिक्स किया जाता है और देन इट कैन प्रोड्यूस रीजेनरेटेड फाइबर. Ma'am, what is wood pulp? वुड पल्प, वुड समझते हो ना, वुड लकड़ी कहाँ से मिलता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसके अंदर से जो उसका स्टेम में जो ब्रांचेस या स्टेम में जो पल्प निकलता है, पल्प का मतलब हुआ आपको उसका ब्रांच का पार्ट, उसको जब आप क्रश करोगे ना, देन यू विल डेवलप दैट. मैम उसका छाल. मैम पेड़ की छाल को बोला जाता है क्या? नहीं, छाल नहीं, उसके अंदर के पार्ट. छाल तो वो बार्क हो गया. वुड पल्प हुआ जो आपके वुड के अंदर जो पल्प होता है, जो यू कैन से जैसे कि ये आपको जाइलम एंड फ्लोएम रहता है ना उसके अंदर, तो वाटरी सब्सटेंस भी रहता है उसके स्टेम में. हाँ, जब उसको क्रश व्हेन यू आर गोइंग टू क्रश इट, तो वो पल्पी हो जाए. वो थोड़ा वाटर के साथ मिक्स करके उसका ब्रांचेस और जो भी जाइलम एंड फ्लोएम पार्ट है वो ब्रेक करके पल्प टाइप का हो जाए. तो दैट इज वुड पल्प विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनर पार्ट ऑफ द वुड. वुड के अंदर के पार्ट है. जैसे सपोज कर लो
आप ये कॉमन एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे एलोवेरा, आप कभी लीफ देखे हो एलोवेरा का लीफ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ रहे हो? Yes, ma'am. और उसको जब हम कट करते हैं, उस लीफ को निकालते हैं, कट करते हैं, तो उसके अंदर से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, जिसको Yes, ma'am. Watery. यूज करते हैं, मेडिसिन में Yes, यूज करते हैं, उसको हम लोग एज अ ड्रिंक भी यूज करते हैं। तो दैट इज that sticky substance which comes out from that leaf part, not actually Yes, ma'am. leaf, वो stem part है। तो उस stem part से जो pulpy substance sticky and containing some part of the leaf also, तो उसको हम लोग pulp कहते हैं। एंड पल्प का ma'am. मतलब और आप समझना चाहते हो तो जैसे आप वुड ये ले लो, एक स्टेम ले लो और उसको ग्राइंड करो विदाउट पुटिंग पोरिंग वाटर, उसमें कोई वाटर नहीं ऐड करो, तो देखोगे कि वो स्टिकी हो जाएगा। आप जैसे आप खाने में कभी चटनी बनाए हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चटनी Yes, ma'am. लीव्स को क्रश करते हैं, we crush the leaves and a Yes, ma'am. very thin fine part of the stem also। तो उसको क्या होता है, जब हम क्रश करते हैं तो अलग अलग लीव्स में जिस जो हम लोग खाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसका एक अलग स्मेल आता है, एक अलग फ्रेग्रेंस आता है। तो that is pulp which comes out from the different types of wood। वुड के अंदर से वो निकलता है, जब वो ट्री से Yes, ले रहे हो, प्लांट से ले रहे हो, बिगर प्लांट से ले रहे हो। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, ma'am. मैम Thank you. वुड पल्प को ही रायन कहते हैं। Okay, then we will talk about another type of fiber, that is nylon. Nylon is developed. It is also known as Vanda polymer. It was the first synthetic fiber which was developed by the combined effect of New York and London. These two countries had their own idea and developed this type of fibers. Collectively, scientists worked on it, and then they developed this type of fiber which is known as nylon, and it is used, it is very elastic, it has got elastic stretchability, elastic बहुत होता है इसमें, tensile means it is flexible, stretch कर सकते हैं उसको, and has silk like appearance, और इसको हम लोग कारपेट में यूज करते हैं, सॉक्स में यूज करते हैं, and hosiery items, whatever undergarments we wear, that in that item we use it. Then military application भी इसका है, rope में यूज किया जाता है, parachute में यूज किया जाता है। Then it is highly durable, बहुत ज्यादा ही durable है, उसमें flexibility है, वो जल्दी से break नहीं करेगा, इसलिए durable भी बहुत होता है। इसका सीट बेल्ट बनता है, टायर कॉर्ड बनता है, क्लोथ्स बनता है, etc. And then next use is that it is also used in making toothbrush, common household article, घर में यूज होने वाला toothbrush, combs, hooks, etc. And it is used in making ropes for rock climbing, and it is used for making fishing net. So till here, any problem children? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है? मैम हुक मीन्स Hook you all don't understand. आप कहीं पर हुक हैंग करने के लिए लगाते हो? यस मैम। कोई भी चीज हैंग करने के लिए हुक लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्या बोलते हो उसको? रोप भी लगाते हैं, हुक भी लगाते हैं, हुक लगाते हैं कभी कभी रोप को स्ट्रेच करने के लिए, है ना? ओके मैम। वेरी कॉमन वर्ड्स चिल्ड्रन, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स है। हुक को भी ऐसा कभी कभी बनाया जाता है, प्लास्टिक का भी हुक्स आता है जो आपको वैक्यूम प्रेशराइज्ड भी होता है ना, जिसमें आपको नेल्स की जरूरत नहीं होती है, वैक्यूम से ही हुक होल्ड कर लेता है। So these types of materials are present in the market. Hook के hold करने के लिए लगाया जाता है। So till here children, all the points are clear, or do you want to have discuss anything more? No, ma'am. Okay. No, ma'am. रेयॉन कैसे बनता No, है? ma'am. Pardon? मैम रेयॉन कैसे बनता है?
रेयन अभी ने Yes, बताया ma'am. बेटा, अभी तुरंत डिस्कस किया। आप क्लास में नहीं थे? क्लास में थे या नहीं थे? मैम क्लास में थे मैम, समझ में नहीं आया था। क्या नहीं समझ में आया आप बताइए, हमने क्या बोला ये मैम आप बताइए। रेयन, मैम रेयन किसके साथ मिक्स होके बनता है और किस चीज को किस कहा किस जाता है, चीज मैम के समझ नहीं मिक्सिंग से बनता है ये पहले बताओ, किस चीज को किसके साथ मिक्स किया जाता है? आई टॉक्ड अबाउट पल्प, इतना पल्प के बारे में बात किए, वुड पल्प के बारे में। तो वुड पल्प को केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है। तो चूंकि वो क्या है, वो एक तरह का वो नेचुरल मटेरियल है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली सिंथेटिक फाइबर्स नहीं कर सकते हैं। एंड सम पार्ट ऑफ केमिकल इज आल्सो मिक्स्ड, केमिकल और वुड पल्प इसको मिक्स करके हम रेयन बनाते हैं, और इसका नाम आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। ठीक है, है। ओके मैम। चलिए। Now one of you please read that topic what we Ma'am, have can I just. read? Read it. Chapter 13, Synthetic Fibers and Plastic. In the previous class, we have learned about fiber like jute, cotton, wool, and silk. They are plant fiber or animal fibers, depending upon the source from which they are obtained. Collectively, we can say that fibers like cotton, jute, wool, and silk are obtained from natural sources that can therefore be called as natural fibers. All natural fibers are used for making fabrics, which are then used for making clothes. These fibers are also used for making a large variety of household articles like ropes, carpets, and a variety of other articles of daily use. However, the demand of fibers and fabrics is so large that natural fibers are unable to fulfill it. To meet this ever increasing demand, scientists have developed artificial fibers. These fibers are also called synthetic fibers or man-made fibers. Synthetic fibers. Let us consider certain examples. Look at a necklace made of beads joined with the help of a thread. Alternatively, observe the toy train formed by joining its wagons. Is there any similarity between the beads in a necklace and the wagons joined with one another? In both cases, a long chain of things such as beads or wagons has been joined. It has now been found that natural fibers are made from simple molecules called monomers. These monomers join in a large number to form a long chain molecule called polymer. A synthetic fiber is also a chain of small units monomer joined together. Do you know the word polymer has a Greek origin where poly means many and mers or meros stand for a small unit or part. The process by which a polymer is made by joining a large number of small molecules called polymerization. Man-made polymers have been developed to meet the ever-increasing demands of present-day civilization. Do you know, in addition to natural and synthetic polymers, there is yet another class of polymers is called semi-synthetic polymers. These are obtained from natural polymers by subjecting them to specific chemical processes. For example, uh, vulcanized rubber is an example of semi-synthetic polymer formed by mixing molten rubber and molten sulfur under specific conditions. Different synthetic fibers. Let us now study about the different types of fibers and their uses in some detail. Rayon or artificial silk. You have already read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China. Fabric obtained from silk fiber is quite costly. Its texture is very beautiful. Later on, attempts were made to make silk artificially.
By the end of the 19th century, scientists were successful in their attempts. A fiber having properties similar of that of silk was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. The raw material is used in preparation of rayon is wood cellulose, which is a natural fiber. This natural fiber is proceeded to obtain a silk-like fiber. Therefore, rayon is sometimes also called regenerated fiber. Rayon is thus not completely an artificial fiber. Its raw material is a natural fiber. Uses of rayon. Rayon can imitate the feel and texture of silk, wool, cotton, and linen. Hence, it is often mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. Second, rayon fabrics are smooth, cool, and comfortable. Rayon can be easily dyed in a wide range of colors. Third, it is suitable for wear in summer because its fabric can absorb sweat. Fourth, Sweat. it is It is used sweat. Okay, ma'am. Fourth, it is used in making apparels like dress, jackets, linens, suits, hat, etc. 5. It is widely used in industries, in surgical products, and in tire cords. Do you know? Rayon is also known by names like viscose rayon and art silk in the textile industry. Nylon. It is truly artificial man-made fiber. It does not use any natural fiber as its raw material. It is the first fully synthetic fiber. Nylon is also called the wonder polymer. Do you know the term nylon is named after two cities, New York and USA, and London in Great Britain. NY stands for New York and uh, LON for London. It was so named as this fiber was developed by the collective effort of scientists of these two countries. Uses of nylon. First, it is highly elastic, tensile, and has silk-like appearance. It is used in making carpets, socks, and other hosiery items. Second, nylon is used in many military applications like making of ropes, parachutes, etc. Third, it is highly durable, hence its fiber are used for making seat belts, tire cords, cloths, etc. Fourth, it is used for making common household articles such as toothbrushes, combs, hooks, etc. Fifth, it is used for making ropes for rock climbing, also used for making fishing nets. Trilene. Trilene is another synthetic fiber. No, stop. Okay, ma'am. Till here, children, do you have any doubts or any difficulty in understanding? No, ma'am. No, ma'am. Or No, you ma'am. have any questions, queries? Ma'am, seat belt is also made up of leather. No. Pardon? Ma'am, Loudly. ma'am, leather is also used in making of seat belts. No. हाँ, तो सीट बेल्ट में क्या प्रॉब्लम है? सीट कार में सीट देखते हो ना, उसका बेल्ट लगाया जाता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वो yes, ma'am. होता है. It is highly elastic. You can stretch it. Yes, ma'am. हाँ, तो it is used. Nylon is used over there also. ठीक है? Okay, ma'am. So any queries, more children? No or yes? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, No, then your work, homework to learn the uses and to learn the definitions. यही आपका homework है. From this chapter, definition and uses comes in your exam. ये exam के preparation point of view से जो important definitions पढ़ रहे हो और जो uses पढ़ रहे हो वो main है इस chapter का. हर एक